Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Boats are made for transferring commodities back and forth, and those that come across Lior tend to stay a while. So it is where many things come to settle. Not at all. I arrived early. Huh? Paimon thinks you sound kinda tired. I'm doing well. There's no need to worry. Great idea! Let's get going! Traveler? ये तो बार बार हो रहा है अपने साथ. हम एक ही मिशन को बार बार कर रहे हैं इसके अंदर. बार बार इसके साथ जाते हैं, पूरा घूमते हैं मार्केट, फ्रेंड्स होते हैं, फिर वही करते हैं. It's all thanks to Miss Dunyarzad's sponsorship that the children can enjoy the SUMERU's festival. ये सेम चीज़ फिर से आ गई. Oh, are you interested in Yalda candies? I have some boxes of candy here. Not much of a choice. All these boxes look the same. It's not that simple. Each box contains a random flavor. They all sound pretty tasty. And there's also lizard tail and oni kabuto. Huh? What were those last two? He'll help me choose. Paimon wants to eat the Sunsetia flavor. No problem. These boxes of candy are numbered 1 to 5 from left to right. Which one do you want? हर जगह नंबर 4 ही है. मैं गलत चुनने वाला था इस बार. कुछ भी चुनना है, 4 ही चुनना है. I like your confidence. No hesitation at all. Oh, congratulations! Number 4 is indeed Sunsetia. कुछ तो दिक्कत है यहाँ का. Wait, how did you know? Don't... What? He was right about all of them? That couldn't have been luck. How is this possible? I packed all those boxes this morning and they've been sealed ever since. Mind reading? X-ray vision? Or some kind of magic trick? This is way too freaky. Tell us what's going on. Since when did you get superpowers? Traveler? ये कौन था? Hey, where are you going? What's going on? Did you see something? Us leaving Dunyarzad without letting her know is kinda rude, you know. कौन है ये छोटा सा?
तरफ वगैरह है और इस What are you looking for? Traveler? पीछे That's... एक मिनट कब आने वाली है ये 9 तारीख को आएगी आज कितनी है 8 सिंगसो चाहिए मेरे को तो इसमें से यार को मैं ग्राफिक इंक्रीज करता हूँ ग्राफिक थोड़े कम है पर ये है कौन नया कैरेक्टर पहली बार तो देखा इसको Look! That's... Isn't that Dunyarzad? What's happening here? Why are there 2 Dunyarzads? You already know that this isn't your first SUMERU's festival, don't you? I'm sure you already know how to use this. A knowledge capsule? Where did you get it? What's inside? You should use it too, Paimon. You know Paimon? Well, this seems kinda sketchy, but Paimon feels like this is what we should do. क्या सीन है क्या एक ही हम मिशन तो बार बार ही कर रहे हैं What the? This is our 20th time at the SUMERU's festival? Huh? No. The 30th? 40th? Just how many times have we been to the SUMERU's festival? Have we been trapped in a single day? If it weren't for you, we wouldn't have even realized. What the heck was inside that knowledge capsule? Your memories are still scrambled? Try your best to remember. This isn't the first time we've met, and I answered that question a long time ago. Let Paimon think. Oh, it's coming back. Meeting you was the real catalyst for restoring our memories, and the knowledge capsule was just your means of showing our minds the way. What about everyone else? Why are you only helping the 2 of us? Your sense of deja vu is stronger than everyone else's, yes? As for an explanation, you 2 received the blessing of Dendro, and you also have special, sensitive constitutions.
It was as if a single sheet of paper was separating those memories from your consciousness. इसने तो अपना नाम बताया ही नहीं अभी तक. A familiar question. I think this is the 7th time you asked that. As you can see, she isn't बस doing बढ़िया. well. You probably sensed it too. The junior Zod you were just with is different from the first junior Zod you met. That first junior Zod is in front of you right now, and she doesn't have a lot of time left. ग्राफिक कैसी है, सही है या मतलब लो है? Looks like you're almost done sorting out your brain. मतलब देखने के लिए अच्छी है या नहीं? ऐसा इंक्रीज करो फिर तो. Good. You passed the test. What's happening? You can awaken our memories, and you seem like you know what's going on. Everything in this world runs in a loop. This cycle is called a samsara. You, me, and everyone else are all stuck inside a one-day samsara. As for the truth, that's on you to find out. If you were told the truth, I can only give you surface ये भी आने वाली है क्या बैनर पे? bits of information and subtle hints. She looks like she isn't doing well at all. Her illness gets worse after each Sub-Zero's festival. If we can break out of this samsara, I might be able to save her. But as things are right now, she's just a small bird in the sky that's about to lose its last feathers. You sure love to use weird analogies. Analogies are wonderful tools. They let you use existing knowledge to understand unfamiliar things. Okay, so with what you know play so with far, me. what do you think the truth is? Clash of Clan. ऐसा. ये क्या नया चीज आ गया? What's happening right now seems to have happened before. This feeling has been getting stronger and stronger. Clash of Clan मतलब iOS में डाउनलोड होता है या नहीं होता है पता भी नहीं मेरे को, फ्री में या क्या सीन है इसका? My mind feels exhausted, even though I haven't done too much thinking. What is going on? ये ट्रैवलर की वॉइस है जो कि हमको सुनाई नहीं देती है कभी. The moon, illusions, and lies. What are they? The Grand Sage said, "Go celebrate the birth of that god to your heart's content." Did he mean something more? We've already experienced the Sub-Zeru's festival many times, and the day of the festival seems to be in a perpetual samsara. यही है. रुको जरा क्वालिटी बढ़ा लूँ मैं भी. मीडियम करके रखता हूँ. इतने में आईपैड की ऐसी की तैसी हो जाती है. ये अटक रहा है पूरा का पूरा, बोला ना. Where do you want to go next? If you'd like to see Liyue's tourist spots. Okay, so with what you know so far, what do you think the truth is? फिर से चाहिए लाइन वाइज करना होगा शायद से. I can't seem to cohesively piece everything together. ये पजल दे रखी है पूरी की पूरी. That should be it. The flow of time is endlessly cycling within one single day. Time loop. A time loop. You've given similarly wrong answers in the past. A pity.
ये है Still a कौन? wrong answer? Paimon thought that made a lot of sense. It feels like time's just repeating itself. A simple time loop can't explain some of the phenomena. You two are still missing a lot of information. Unfortunately, I can't give you any more hints. चीची की छोटी बहन है. The Sub-Zero's festival is happening every day, but that doesn't mean we can waste an infinite amount of them. Hurry and find the truth before today's festival ends. Which game you? मैं मतलब क्या होता हूँ ऑफलाइन गेम में खेलता हूँ वैसे तो. Think about our current situation. To save Junior's I'd, we have to escape the samsara of the मैं खेलना तो बहुत सारे गेम festival. चाहता हूँ मतलब इसमें की To do स्टोरेज ही that, नहीं है. we need to स्टोरेज की figure out दिक्कत है. what's happening. The truth. 64 He GB है. rejected the idea of a time loop, so पीसी बिल्ड कराएंगे तो खेलेंगे there's अच्छे अच्छे something, गेम. right? Paimon's memories say that we've already done this many times, but let's go talk to people again. It's more productive than sitting here and scratching our heads. Why don't we start with those stall owners? खेलने के लिए तो मैं पूरा दिन गेम खेलता हूँ पर दिक्कत वो है ना कि स्टोरेज की कमी है इसमें. अभी एक ही गेम रखी है मैंने सिर्फ ये जेंशिन 18-20 GB की गेम है इसमें. 18-20 तो कुछ और कोई दूसरी गेम आएगी नहीं इसमें. Hey there! Hey, it's you guys again. Where's your cultured friend? She's feeling a little unwell. I see. Did you come back to buy something? I guarantee the freshness of my products. Huh? What brought this about? I hurried back from the forest yesterday, and I'm selling produce here today. To put it another way, if you really think about it, was yesterday truly yesterday? Did you actually come back from the forest yesterday? What kind of philosophical nonsense is this? Are you two daydreaming? Don't you know that no one dreams in SUMERU? 3 Go somewhere else if you want to find someone to daydream. GB स्टोरेज मेरा तो 64 GB है. He actually has a point. Is this a dream? Is everyone dreaming? एक गेम ही सिर्फ आता है इसके अंदर और कुछ आ नहीं पाता. मैं लाइव स्ट्रीम ऐप है मेरे में. It's so weird that people here don't dream. यूट्यूब है और कुछ नहीं है. Anyway, एडिट करने के लिए बस just a dream, we would have woken up a long time ago. 3-4 एप्लीकेशन एक गेम खत्म. ऐसा सिंगल डिवाइस से है ना मेरा लाइव स्ट्रीम करता हूँ. Oh, it's you two. Was my divination so accurate that you felt compelled to compliment me in person? Ooh, I knew it! I told you, the god's divination is highly accurate. You just hadn't fully understood its significance yet. You're really excited about this, huh? That's exactly why we came back. Help us better understand it. Help you better understand it? Well, that isn't exactly what I excel at. So, you're admitting that you don't have a clue? Anyway, what kind of situation did you get into? Huh? Hold on a second. I thought you guys just lost your wallet or fell for a scam. What you just said, are you serious? Does that kind of thing actually happen in real life? I knew you weren't going to believe it. Marvelous. Truly marvelous. I believe you. Recall the interpretation of your divination. The moon, illusions, and lies. It really felt like an omen. When you say it like that, the divination does sound like it's related to what's going on. Can you read any more into it? I believe that the Archon's revelations are never more than vague hints.
anything more specific is beyond the reach of mere mortals. The book only says, if you trust your instincts and overcome your fears, the sun will surely rise. So that's how it is. Looks like fortune-telling is just fortune-telling. It's no good for practical problems. We haven't made any progress. Who else can we talk to? Paima remembers that we tried talking to her a couple of times, but she always thinks we're playing pranks on her. You think she'll brush us off again? Yeah. If we tap into Dia's strong sense of responsibility as a mercenary, then she'll definitely take us seriously. At this time of day, Dia's probably just finished beating up those kidnappers. ये तो दूसरे वाले हैं रियल तो उधर बेड पे पड़ी हुई है Fine, my lady. It's just a scratch. Perfect timing. Both of you are here. Paimon, traveler. You came at just the right time. Listen, there was a dangerous Huh? You saw? Then why didn't you jump in earlier? If someone was protecting Miss Dunyarzad, I could have went all out. You want the traveler to take Dunyarzad somewhere to rest up while you check to see if there's still any kidnappers around. Did Paimon get that right? How did you know what I was going to say? We need to say something convincing. राइट चीज चुनने का है इसमें से People in Sumeru don't dream. That doesn't sound right. I need to carefully think. My mind feels exhausted. My mind feels exhausted, even though I haven't done it. The moon, illusions. Dia sold her greatsword to raise additional funds, and then she was injured because she wasn't used to her new weapon. Tell her, traveler! I didn't tell anyone about that. Including Miss Dunyarzad. You couldn't have known. And just now, you literally took the words right out of my mouth. What's going on? Alright, so this is the situation. It's kinda hard to believe what you just told me. First, let me make something clear. Most of us desert dwellers might not be the She's quieter than usual. Yeah, she isn't the same as before, but her parents said that this is how she was like at first. Huh? At first? I don't quite understand what you're all talking about. My lady, are you angry? Alright, I'll give you the benefit of the doubt since you knew about my greatsword. Let's make this a quick trip. Miss Dun... इस मतलब इसको लेके जा रहे हैं ना वहाँ पे जिधर वो है असली वैल्यू ताकि इसको समझ में आए कि हाँ क्या चल रहा है इधर Nahida, we brought a friend. Are you busy? I thought I told you that it won't help to bring anyone here. We just wanted her to see the real Dunyarzad's condition. The real Dunyarzad? Where and who are you talking to? Huh? I told you that you two are special. Other people can't see me or Miss Dunyarzad here. Hold on. Over there. Is that? Wow. How perceptive. Does she have invisible antennae?
Miss Dunyarzad, she's lying down here, isn't she? How's she doing? Her condition's really bad, and she's basically in a coma. How did you know she was here? I can sense her aura. There are also lingering feelings of something like regret or disappointment. Do you believe us now? The SUMERU's festival has been repeating itself. So, you think the sages are behind this? Yeah, they've always been against us. Wouldn't surprise me if they're using the Akasha to intentionally repeat the SUMERU's festival as a sick joke. You have a point. Aside from the Dendro Archon, the Academia sages are the only ones in SUMERU who could pull off something like this. Maybe there's more to the Akasha than we know. Right! Didn't you awaken our memories using something that looked like a knowledge capsule? The Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. A gnosis can do that? No wonder the Akasha is so magical. It's being powered by the gnosis of SUMERU's Archon. So, this Nahida you mentioned, what did she say? She said, and Paimon quotes, "The Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace and it grants knowledge to the people." Compiles the wisdom of the entire populace and grants knowledge to the people. Wait. I get the grants knowledge part. That's what people have always used the Akasha for. But compiling the entire... Did she mean that the sages enter new knowledge into the Akasha? Oh yeah, that sounds about right. What do you think? What's happening right now seems to have happened before. That doesn't sound right. I need to... Right, Nahida said the... That doesn't sound right. Try there again. Feels ये तो बिल्कुल नहीं होगा. People in SUMERU don't dream. ये That doesn't sound right. I need to... ऐसे. You mean the Akasha is causing our mental fatigue? Huh. Now that I think about it, my head's been feeling unusually heavy. When the desert dwellers set off on their quest for knowledge, a sage once said, knowledge always comes at a price. Compiling the entire country's knowledge. You think the Akasha Portal 180 is extracting information from us? Who knows? The Akasha can put knowledge in our heads, so who's to say that it can't also poke around in there? We don't know any specifics. What's the point of doing something like that? Just think about it. If you could combine the knowledge of every single person in SUMERU, then you can basically turn SUMERU City into a single massive brain. This hive mind can make breakthroughs in problems that even the smartest geniuses can't crack. An excellent deduction. And the analogy comparing SUMERU City to a massive brain? I love it. In that case, इसके अंदर जितने छोटे कैरेक्टर है ना सबका दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलता है. Yeah, I was only wearing this for show in the first place. Didn't expect the sages to cook up such a conspiracy. Mark my words, when this is over, I'm getting evidence and exposing this whole thing to the public. तो टाइम लूप में फंस रखे हम लोग एक ही मिशंस को बार-बार कर रहे हैं सर. Oh, that! Paimon knows what you're talking about. It's a single soft beep that sounds like it's coming from the Akasha terminal. The sound of a beep. रियस्टी गेमिंग हेलो क्या हालचाल. आवाज़ नहीं आ रही है स्ट्रीम पे मेरी. ऐसा गेम किया मेरी आवाज़ नहीं आ रही तो बता देना. We weren't using our terminals, but we heard a beep anyway. मैं चेक नहीं किया अभी तक. ये क्या है? Traveler, did you hear that? इनके अंदर से आ रहा है साउंड.
Our ears aren't messing with us. There was स्टेन आ रही definitely, है but it sounded like स्टेन it क्या was बात coming है from inside my head. कैसी लगी गेम ये तो बता दे We took off our Akasha terminals. आ रही है अच्छी बात है मैं देखा नहीं था स्टेन गेम कैसी लगी तेरे को बढ़िया भाई इसके अंदर के तो क्वेस्ट पे फंस रखा हूँ मैं तो ये टाइम लूप है पूरा का पूरा तेरे को एक ही दिन में मतलब बार बार घुमा रहे हैं ये एक ही मिशन तेरे को बार बार करना है ये देख स्टेन ब्रो यू कैन अरे वो लाइव स्ट्रीम करता है मेरा ही फ्रेंड ऐसा उसका चैनल पे भी जा सकते हो तुम देखने के लिए पीसी में स्ट्रीम करता हूँ It's extremely difficult for lab rats in an experiment to understand why they're being treated the way they are. If we're lab rats, then what are you? Nihita, you've never told us anything about yourself. Channel name. वही है नाम जो लिख रखा है उसने वही है. I'm the moon. The moon? Wasn't that the... Anyway, knowing who I am won't help you get closer to the truth. So you should focus on other things. Don't get distracted and miss any clues. Okay then. Dia helped us a lot yesterday, so let's go find her. If Paimon's reading the time correctly, those kidnappers should be showing up soon. ये क्या सीन है? फिक्स कर दिया गया इन लोगों ने. तो इसके लोडिंग स्क्रीन इतना टाइम लगाते हैं ना. My lady, did you get hurt? फिर से सेम चीज फिर से. Dia? What's wrong? Why are you both gawking at me like that? You didn't get hurt this time. Huh? What do you mean this time? Why are you so surprised that I managed to get out unscathed? Those kids were amateurs. The link तेरे लिंक चाहिए उसके चैनल का. Did you know about my great sword? I haven't told anyone about it. Please, don't tell Miss Junior's ad. So Dia's वो मांगो उससे देखो देगा भी स्ट्रीम पे होगा तो. लिंक ऑन कर. अरे लिंक ऑन करने के लिए मेरे को इसके अंदर को गेम क्लोज करना पड़ेगा. If I had to say something, it's weird how such a new weapon could feel so familiar. नाइट वोट लिंक नहीं पेस्ट करने देता इसमें. Already used it to fight a countless number of battles. अरे वो चैनल का नाम लिख देना वो चैनल सर्च कर लेगा. चैनल का नाम लिख दे वहाँ पे. That's right. क्योंकि मैं एक डिवाइस से कर रहा हूँ मैं उसको क्लोज नहीं कर सकता ना. दिक्कत है. Knowing the theory of battle won't get you anywhere. Traveler, what do you think? Yeah. मेरे को लॉगिन करना पड़ेगा उसमें नाइट वोट के लिए. Oh, you're right. Earlier in the Samsara, something like this would have never happened. I have no clue what you two are talking about, but it's still dangerous here, so... So you want us to take Dunyarzad somewhere else to rest while you check if there are still more kidnappers around, right? How did you know what I was gonna say? Can you read minds? Forget it. अबे फिर से वही चल रहा है. एक मिशन घुमा घुमा के दे करके दे रहे लोग. सैड लाइफ 3% बैटरी चार्ज करना पड़ेगा मेरे को. अरे मेरा खुद चार्ज पे लगा के मैं इसीलिए खेलता हूँ क्योंकि चार्ज मेरा ख़त्म हो जाता है खेलते खेलते.
बच चली। It's finally nighttime. Aside from Dia not getting injured, एक काम कर everything सकता हूँ, seems to स्टेन stay the तेरा मैं same. लिंक दे सकता हूँ, रुक। ये देख। Listen, Nahida, we found out that Dia got out just fine today, even though she got injured every other time she fought the kidnappers. Do you think the Samsara has been broken? Have we saved Dunyarzad? Really? Good job on all that progress. Get some good sleep tonight. Hey, what kind of an answer ये is छुटकी का दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलता Tomorrow है। will come. चिंगसिंग ने Everyone knows this 120 is common FPS knowledge, में but the only way you चल can रहा know था, that for sure is if you experience स्विच tomorrow. ऑफ हो How many गया, todays has it been? हो गया। Is it possible that today will be 120 followed by FPS में चलता yesterday? है क्या जिनसे? Does tomorrow truly exist as मेरे में anything 60 beyond FPS a पे लैग made-up होता है वो। concept? It's even possible that this entire world is a lie, and the history of the whole world has just been one endless Sub-Zero's festival. कल नया बैनर आ रहा है ना। okay, no more. Everyone's brain is already shut down. That's why it makes no sense to waste your energy thinking about things you will learn tomorrow. Get some good rest. You know, use the bathroom and flush your anxiety dookie away. Yes, iPad Pro में सब Kotak, पे what चलता did you just say? Did Paimon hear you correctly? Huh? है। अब बड़े लोग भाई Honestly, they iPad feel a Pro sense रो। of relief after they take a doop-doop. That's why I बस बहुत suggested you बैटरी could try खत्म that. करता है, वो तो Yes, दिक्कत that ही sounds है। strange. It's so strange and so against common sense that पीसी में नहीं चलता क्या I'm उतने at a पे? loss for words. Yeah. Even though it's happy and lively at the Sub-Zero's festival every day, it feels like it's been a long time since we've really gotten to relax. फिर वही बीप सुनाई दी। ये सुमेरु की स्टोरी कितनी कंफ्यूजिंग है ना, एक ही जगह को बार बार घुमा घुमा के दे रहे हैं लोग। मैं 3 बार मिशन किया हूँ, सेम टू सेम मिशन करके आया हूँ, पता नहीं। जिसमें चॉकलेट सेलेक्ट करना होता है। We're still in the same day. चाय गरम कर सकते हो तुम तो इतना गरम हो जाता है। You already knew last night that we didn't break out of the Samsara? Why did you tell us? Would there have been a point? You would have spent the night with new worries, with tomorrow still out. ये भी कैरेक्टर है ना। In that case, you might as well rest within that brief moment of hope. ये An बैनर पे आएगी opportunity क्या? like that doesn't come by often, and I thought it might help you clear your minds. Paimon thought that Duke did that! Whatever. Guess you were looking out for us after all. Of course. In the time we've been together, Yes. you two have been everything to me. पाइमोन कभी आएगी क्या? पाइमोन को लेके खेलते हैं। And everything, but maybe you're taking things a little fast. What I mean is, even though I had asked you to solve this puzzle, you two are still the only ones who can see me and sense my presence. In other words, if you weren't here, I may as well not exist. That's why you two have been everything to me. Get it? Nahira's talking about confusing stuff again. Anyway, that's enough chit-chat. So, traveler, I need did the new Paimon clues पे। yesterday help you gain a new understanding अरे of the पाइमोन situation? गॉड है, मेरे को लगता है। इसका इतना नॉलेज है ना, Swapping your previous theory. क्या होता है, Oh, हर yeah. किसी से लड़ती है जाके। Gosh, how did we not notice that? In a simple time loop, people's physical conditions should also reset. So, मेरे को लग रहा है ये what's your बहुत new मतलब एंड hypothesis? गेम में इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है बहुत ज़्यादा। The beep is a prompt tone for Akasha operations. That doesn't sound right. I need to care. The moon, illusions, and lies. What? That doesn't sound right. I need to क्या सीन है? तो पहले 2 याद है, rely heavily on muscle memory. 5 ज़्यादा Dia was able to use her experiences to avoid injury in later samsara cycles. ये
if all our memories of a day are erased? Submit. Oh, then the beep we hear every night could just be indicating the deletion of our memories. That's why when we wake up, everyone thinks the Sub-Zero's festival hasn't happened yet. It's already the next day, but everyone still thinks it's the day before. But muscle memory can't be erased. That's why Dia has been getting better at using her greatsword. Now everything makes sense. A brilliant deduction. Nahida, tell us if we're... To put it simply, it's as if you've mistaken a pyro crystal fly for a firefly in the night. That isn't simple at all. Why don't you go talk to Miss Dia again? You might learn something new. Right. She did help us find our latest clue after all. Let's go. तो हमको पता चल गया अब हमारी मेमोरी तो नहीं जाएगी, पर उसको बार बार जाके बताना पड़ेगा हर चीज़ ऐसा. इसको बोलते गेम को, द गेम कितना अटकता है ना यहाँ लो डिवाइस में. इस आईपैड को हैंडल तो करना चाहिए था, ये हैंडल ही नहीं कर पा रहा अब गेम जब से अपडेट आया है. There you are. Really took me a while to find you. As expected, Dia also didn't get hurt today. Get hurt? Why would I? Don't underestimate me. Well, you're still getting used to your new greatsword. Huh. Truth be told, I also think it's pretty strange. It just suddenly felt so familiar in my hands and... Traveler, could you explain the situation to her today? Oh, that works. What happened to you guys while I was gone? Did you get brainwashed by some cult? Don't think too hard about it. Just take... Alright then, let me get this straight. You're telling me that my body's already gotten used to this great sword, but my brain just doesn't remember it? Yes, your memory's being erased every day. Then I'd have to disagree. That's impossible. Oh? Why do you think that? If we've actually been reliving the Sub-Zeru's festival day after day, then what happened to the things we used, the money we spent, the food we ate? Common sense says my wallet should have emptied itself a long time ago. There's no way I wouldn't have noticed that. ये भी पॉइंट है. Right. They could use the Akasha to record what everyone did that day, and then use the city's resources to replenish everything. It's not very likely, but it's also not impossible. No, it is impossible. I've got proof. You have proof? You two are surprisingly serious about this nonsensical discussion. Come with me, Miss Dunyarzad. Please come along as well. I still can't guarantee that this area is safe. Paimon can't believe it's Dia who wants to show us something this time. 2 days ago, we were the ones taking her to see Dunyarzad. चलो देखते हैं कब तक चलेगा ये. तो ये FPS जाता है तो बहुत ज़्यादा. यार झाड़ियों में समझाने लेके गई है मेरे को. This is it. ये क्या है? This is a wooden training dummy. What if... See those marks on the dummy? Those are the result of several days' worth of practice. Let's say the sages didn't replace it every day. Shouldn't it be hacked to pieces by now? That's true, but what if they did? Then the sages would have had to reproduce every mark I left during previous training sessions. I'm a professional fighter. My martial school has always emphasized the importance of refined control. The force, angle, and entry point of each strike is calculated and deliberate. That's why I remember every mark on the dummy, as well as my state of mind as I made each strike. It's just as they say, each swordsman has their own unique style.
and even the same swordsman can't make the same cut twice. It would be impossible to copy these marks. Is it really impossible? What if they use some fancy machine to carve every single mark? People often say that a camera's photo can never replace an artist's painting because the former has no spirit to it. The same thing applies here. At a mere glance, I can differentiate carved marks from the results of combat training. Whew, hope that cleared things up for you. Hey, is this that new brain exercise game that's been super popular with the scholars lately? Anyway, it's getting late. I should escort Miss Dunyarzad to Nilu's stage. See you later. ये तो हम लोग को इसी जगह चली गई. Is our memory deletion theory also wrong? But at least we've reached some other conclusions in the meantime. Yep, that's true. So strange. Paimon, huh? Leaving the city? You're right. It's really strange how we never thought of such a simple solution. Paimon can't believe it. Did we miss this because we're tunnel visioning too hard on our other theories? Or how about we go back and ask Nahida? Maybe we've forgotten something about leaving the city. ये भी ट्राई करके देखते हैं. चलो तो जाने देगी या नहीं जाने देगी. Time to act. बहुत बड़ा मैप होगा ना, इसलिए रेंडर नहीं हो पा रहा अभी. Did you find something new? Sort of. We're mostly sure now that we're not in a time loop. Leaving the city. As far as I remember, you've mentioned your plans to do that twice before. We did? But we don't remember anything. What happened after we talked about those plans? What did we say when we got back? Let me think. I don't think you ever actually told me what the outcome was. Oh, it's probably more accurate to say that both times you never came back the whole night. But you two sometimes stay out the entire night anyway, so at the time, I didn't think too much about it. It is true that sometimes we lose track of time during our investigations. Before we know it, it'll already be the next day. But still, neither of us remember anything about leaving town. Really? That's kinda strange. In theory, I should have already awakened all your memories. Yep. Something here is definitely fishy. Let's get to the bottom of this tomorrow. अब फिर वही काम होने वाला है. फिर जाएंगे हम, पूरा कांड वापस करना पड़ेगा. बातें करनी पड़ेंगी उनसे वापस. About that. Well, where should Paimon begin? Traveler, aside from your memories that were just restored, I have another message for you. Listen to it and you'll understand. Can't go back. There are countless spaces here. Our SUMERU's festival in SUMERU City is just one of them. Traveler, you should be missing 2 days worth of memories. Paimon will fill you in. 2 दिन पहले जाएंगे. वाह. From yesterday. Okay, let's go. 2 दिन की मेमोरी मिसिंग है. अब उसको चेक करने के लिए हम लोग पीछे आ गए. वाह, क्या बात है. यही करते रहेंगे लग रहा है इसमें पूरा का पूरा. और ब्लैक एंड वाइट में चला दिया इन लोगों ने. क्या हुआ था वो दिखा रहे कि हम लोग पीछे गए थे जब छोड़ के जा रहे थे. Why can't we leave the city? What is the academia up to now? Don't ask me. It's not like I can tell you anything. This is a direct order from the Grand Sage. I have a real emergency. That's your problem. Make sure you make a request in advance next time. But it's not like you can just predict business matters in advance. तो ये जाने क्यों नहीं दे रहा है? It looks like the academia already announced a lockdown for SUMERU City today.
How completely unsurprising. Let's go and question them. Hello, sir. Why can't we leave the city today? Here we go again. Don't ask me, I don't know either. We just received an order that no one is allowed to enter or exit SUMERU today. Angering me won't get you anywhere. If I had that kind of insider info, I would have left this stupid post long ago. It looks like he really doesn't know. If we can't get anything out of him, let's take matters into our own hands. Why don't we climb over the walls? Oh, this is a good spot, and the guard hasn't noticed us at all. Let's huh? Why? Are you going to leave Paimon behind? But what if things get really weird out there and you get into some trouble? Then Paimon won't be able to help you. Oh, Paimon knows that Paimon can't do much, but they've always been together. Okay. Paimon will wait for you. Promise Paimon that you'll come back as soon as possible. Just a quick look. And please, be careful. कुछ ज़्यादा ही चिंता हो गई इसको तो. पर Paimon would never see you again. You just disappeared. Paimon waited for you for hours and hours at the city wall and you never came back. You promised Paimon that you were only taking a quick look. Paimon, calm down. He's here now. I don't think he understood what you were saying. Paimon doesn't care. Paimon wanted to go look for you, but you also said that Paimon should stay. Paimon was so worried and so scared the entire day. Okay. Paimon will forgive you. The most important thing is that you didn't actually disappear. Oh, Paimon was so scared that you had gone into another world. Okay, Paimon, can you tell us your perspective of what really happened yesterday? I see. Using two people's different perspectives. After that, you left the city. Paimon kept her eyes on you the whole time, but then you disappeared in an instant. No way! Paimon was watching you with the fullest attention. What's your perspective, Traveler? You sure you don't have any memory of this? I guess that explains everything. You also lost your memories the last 2 times you tried to leave the city. Those days' memories can't be awoken. So, if we leave the city, our memories will be completely erased? It really sounds like something big outside of the city is being hidden on purpose. But this way, we'll also never discover what's outside. Something like a message? But how can we send it back? Don't look at me like that. I'm not used to being stared at. इसी को पकड़ो. Okay. You want something that can pass on messages, right? Give me some time and take care of Dunyar's out for me. Yep, now we're talking. तो इसकी याद क्यों नहीं जाती पहली बात तो. अभी भी तो मेमोरी में ही है 2-3 वाली जो भी है. ओके. ब्लैक एंड व्हाइट की हटा नहीं अभी तक. Here you go. What? Isn't this just an Akasha terminal? I made some little changes.
Akasha terminals are already capable of sending messages. To make something like this? Nahida, you really know the Akasha like the back of your hand. Yep. I'll help you save the messages. It should be pretty easy to use. I just can't guarantee the user's status and signal coverage when they're outside the city. We'll never know until we try. At least we're taking the initiative now. Let's go then. Let's expose those sages. All right. Paimon isn't as worried about being separated since it happened once yesterday. But Paimon still isn't happy about it. Okay, see you tomorrow, Traveler. That covers everything that's happened so far. Yes. Although the signal was choppy and had some interference, we still managed to receive 2 messages from you when you were outside. Okay, now that you understand what's going on, let's hear the messages together. फिर पीछे भेजने वाली है Can't ये. go back. There are countless spaces here. Our Sub-Zeru's festival in Sumeru City is just one of them. I've entered another space. Before me are flowing sandstone and howling fish. Impossible and surreal sights. बीएसटी All गेमिंग these कौन सा spaces are लैपटॉप empty है? except for the Son of occasional God. ones that contain mute puppets rather than people. I can't sense any human presence. वो लिख तो रखा है लैपटॉप. क्या सीन है? डिटेल है क्या है वो? पर इतना बता हीट होता है वो. That's one heck of an info dump. It sounds like you left the Sumeru city space when you set foot outside of the walls. But everything looked completely normal when Paimon was looking out from the inside. There's another part here. ये सुबह से उठ के कर रहा हूँ, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ These है. spaces have पता been नहीं क्या सीन है. disappearing one after the other, absorbed by something like a sun in the sky. ये बहुत बड़ा क्वेस्ट है पता है सुमेरो का. And now, even the final space has also disappeared. Behind me, a lot of spaces just appeared again from thin air. I get it now. Those spaces are actually... जैसे फ्री है इसमें ट्राई कर लो. Probably because yesterday just ट्राई happened to करूँगा end फिर at तो. that moment. स्टोरेज नहीं है ना इसके अंदर ज़्यादा, तो Did hear a beep from the Akasha. गेम क्रैश होता है. Did it come from here or from the message? The message. फ़ोन में डाउनलोड It कर should लूँगा, come from the देखता हूँ Traveler's Akasha terminal. फ़ोन में क्या सीन है. Traveler said even the final space has also disappeared. Traveler. 100 MB का What do गेम you है. think that final space could have been? Was that space actually the real world? But wouldn't a real space just randomly disappearing like that be catastrophic? That doesn't sound right. I need to careful. My impression is that each day... Oh, so that's what it is! After the sound of the beep, the final space, the Sub-Zeru's festival, also disappears. And later on, Traveler also mentioned a bunch of new spaces materializing behind them. Paimon's head is spinning. Just what are these spaces anyhow? Well, consider this. For all the horrors of the Archon War, at its heart, it was just a game where a bunch of gods fought over 7 seats. So no matter how strange or spooky things may look on the surface, maybe all they point to in the end is a small and simple secret. Wow, the Archon War, huh? That's an analogy and a half. Hey! फिर इसको छोड़ के चले गए हम लोग. देखता हूँ पहले क्या मतलब क्या सीन है. रुको
ये है भी क्या, ये ना गैस ऑफ क्लैन। पर खेलना नहीं आता मेरे को, ये क्या सीन है। नौ साल के बच्चों के लिए नहीं, ट्राई कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एनी अपडेट प्लीज लॉग इन। ये नया अपडेट क्यों आ गया? तीस MB का अपडेट, इन लोग का रोज ही अपडेट आता है, पता नहीं क्या। तब सिर्फ ये लोग स्टोरेज फुल करना चाहते हैं क्या? थोड़ा सा स्टोरेज बचा है उसको भी फुल कर देंगे लोग, ऐसे तो। अब वो स्टोरी चल रही थी, वो दोबारा चलेगी वहीं से, पीछे से, मतलब शुरू से। ये लोग लैग फिक्स करे ये दे तो अच्छी बात है, जो दे दिया छोटे डिवाइस में चले ना गेम, फायदा क्या फिर। मेरा तो बैलेंस पे सपोर्ट नहीं कर पा रहा है गेम को। लैग फिक्स करवाओ तुम लोग सबसे पहले गेम का। दिन भर अपडेट ही करते रहते हैं हम लोग। ये जो लैग होता है वो फिक्स हो जाए, इससे तो अच्छी बात है। ये जो अटक रहा है ये बार बार बीच में। Do you want some alone time to think? Alright then, Paimon won't disturb you. समझदार है। सुबह से शाम हो गई, इधर ही बैठा हूँ क्या? The dance of Sub-Zeros is about to begin. I'm going to go watch it. Okay. Why don't you go ahead, Dunyarzad? We still have some other stuff to do first. Okay then. I'll see you later. वो हमको लेने आई थी और उस पाइमन ने भगा दिया उसको। Time is ticking away. Awesome. What is it? Paimon wants to know. Oh, wait, no. Let's meet up with Nahida first. You can tell us both together. This. ऐसे स्मूथ चल रहा है, मतलब मैं स्लो करके चला रहा हूँ तो इसको अभी थोड़ा तेज भगेगा
तो अटकेगा। ये अटकने लग गया फिर से। बे स्मूथ करो गेम को, इतना बड़ा वर्ल्ड तो बनाए तुम लोग। नहीं तो जब वैसे चलाना था तो देते ही नहीं गेम को ही, इसी खरीदो तब खेलो, ऐसा सीन। अबे फिर बताए कि तुम 2-4 दिनों से तुम लापता थे। You're back. I've been waiting forever for you two. Are you ready to take your Sub-Zero's exam and graduate from the festival? Okay. First off, have you discovered the hidden truth? ये होगा। The moon illusion. That doesn't sound right. People in Sumeru don't dream. ये सही है। We've already experienced the Sub-Zero's festival many times. That doesn't sound right. I need all the bizarre spaces I saw outside this. Those spaces remind me of. That doesn't sound right. अब क्या लफ्ज़ राइट ही नहीं होते हैं। Those spaces remind me. Those spaces remind. इसको सिलेक्ट करके इस पे क्लिक कर। We are all in a dream. People in Sumeru think they don't dream, but the truth is the Akasha steals their dreams without them knowing it. And those spaces with no human presence are... So people in Sumeru do dream after all. Correct answer. Now, how did you conclude that the Akasha is capable of this? कुछ मेरे को है। And it grants knowledge. That doesn't sound right. The Akasha relies on the power of hypnosis. That doesn't sound right. It compiles the wisdom. That doesn't sound right. तेरे लिए उसका भी है। It is the manifestation. Submit. Oh, okay. Those dream-controlling creatures in the forest also get to... But is stealing everyone's dreams are fantastical, complex, and full of imagination. People's brains are the most in other words. So in other words, Emma remembers her saying that the real story is that the sages from the... Oh? By the sounds of it, you understand the current situation pretty well. So then, what about this? Those spaces kept disappearing before my eyes. Those dreamscapes kept vanishing. तेरे मुंडे को मैं तोड़ दूंगा। I can't. Correct. The Akasha is keeping each person's brain in a constant dream state, but also separating their consciousness from their own dream. Their disembodied consciousness is placed inside the collective dream of the no one is any the wiser as another day passes in the dream. People wake up to yet another dream about the Sub-Zero's festival. So, this is like a dream factory, and the Akasha is a dream harvesting machine. Very good, Paimon. Using analogies well is an excellent habit to get into. Okay, so that beep we keep hearing is actually from our real-life Akasha terminals. Taking off our terminals in this dream doesn't do anything. Alright, last question. Who is... इसका क्वेश्चन सही बिना तरुण They say that alchemical divination is the Dendro Archon's divine revelation. So you noticed. उसने सबसे पहले ही बोला था वो बात। I thought that one would be the hardest question. That's why I put it last. इसको लग रहा था सबसे हार्ड क्वेश्चन है। Everything about you is different.
to when we were asking all over the place for info about Lesser Lord Kusanali. Paimon didn't expect to meet you like this. Yes, those can wait until we're back in real life. On the other hand, I'd be happy to answer any more questions you have about here and now. Firstly, this dream we're in is completely based on reality. People have already experienced this Sub-Zero's festival, so it would be very difficult for them to find anything that strikes them as surreal. Secondly, you're probably wondering why people don't have any memories from earlier samsara, right? That's because people don't remember their dreams most of the time anyway. And in any case, their actual dreams are being taken away from them by the Akasha. So whenever they wake up in this dream of the Sub-Zero's festival, they don't remember anything from their previous identical dream. That reminds Paimon. Traveler had a dream when we were in the Avidia forest, but couldn't see what it was about after waking up. Yes. Only after receiving the blessing of Dendro can a person gain the Dendro element's dream-enhancing power. That explains the feelings of deja vu. Meanwhile, everyone else has no idea that they are in the Sub-Zero's festival samsara, while their dreams are stolen from them over and over again. Traveler है ना इसमें. Now that you know this is all, have you heard the saying, "Don't wake a sleepwalker"? Your notion of reality, that's why I could only give you Can humans really keep dreaming forever like this? We might say your mental fatigue has already answered this question, especially those whose health is compromised to begin with. People's lives are at stake here, and nobody knows a thing! We've got to put a stop to this! I know, right? Why did they have to base this dream on my birthday? Could it really just be a coincidence? Even you don't know the reason? Wow, now that's strange. The Academia sages are determined to harvest lots of dreams in a short time. No map traveler, do you have any information? Those spaces remind me of dreams. That doesn't sound right. The Grand Sage said, Celebrate the birth of that god? Could it mean deceiving the people of SUMERU with no regard for their safety? No matter what they're trying to do, this is after we end the Sub-Zero's festival samsara. We have to look into them. How can the sages of the Academia do this behind their Archon's back? In the end, I'm just the moon. The real sun is long gone. A sun and a moon? Nahida's talking in riddles again. फिर वही beep. We're out of time today. I'll tell you how to break free of the samsara tomorrow. सेम चीज कर करके ये लोग परेशान कर दिए. एक ही क्वेस्ट को गोल गोल घुमा रहे उधर ही. Good morning, Nahida. Wait, now that Paimon remembers everything, should we instead say good morning, Lesser Lord Kusanali? Hey, what's wrong, Nahida? You don't look too good. I'm afraid that what you're thinking. पहली बार तो गायब किधर हो गई पीछे जो लेटी थी पहले. Did Dunyarzad already disappear? No way. Are we too late? The real Dunyarzad's consciousness has indeed disappeared. It can no longer endure the constant dream harvesting. Paimon can't believe it. Wait, so what about that other Dunyarzad? She's actually something like a puppet, but not completely. The real Dunyarzad's consciousness could no longer keep playing her role in this dream. So another Dunyarzad appeared to replace her in the dream. But personality-wise, she's nothing like the real Dunyarzad. Puppets are stiff, and can't copy a living person's vitality. After all, they're just their filler. And you know, speaking of which,
The old Junior-san truly believed that she met you within her consciousness. Yes. Back then, her family was overly protective of her. I just gave her a little wisdom so she could look at life in a new way. So that she could be her own person. But even so, she's still... far from it. I'm still a long way off from being a real Archon. I couldn't even save her. If I were a competent Archon, I wouldn't have let my most faithful follower die at the Sub-Zerus festival. अच्छा मैं भी COC खेलता पर मैं आज तक खेला ही नहीं कभी तो मुझे कुछ पता भी नहीं है पता क्या है I'm not beating myself up. All I did was to rationally observe the distance between myself and a real Archon. Don't be like that, Nikita. Even real Archons are still allowed to be sad. To prevent more tragedies like this, we must end the samsara as soon as possible. Great, but... Although the Sub-Zerus Festival dream is under the Akasha's control, that means this dream belongs to a host who created it. Huh? So, how should we find that person? Well, if this is someone's dream, then everything here must come from deep within their consciousness. Which means, with the power of imagination, they can change anything in this dream. एक तो ये क्वेस्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है इतना बड़ा क्वेस्ट है ना क्या बताऊं Imagination means breaking through what you perceive as normal. क्या क्या फिर क्या करूँ COC खेलूँगा कल brings a plate to you, you naturally assume that food is on it. खेले क्या COC However, कल if you're the dream's host and you become aware that you're dreaming, the dream will respond in kind, and the server really will bring you gold and mora. But right now, our host is unaware that this is a dream. No matter how, find some way to make that person realize that they're dreaming. Usually, once that happens, the person will wake up and the dream samsara will be broken. How are we going to find them, though? पर मेरे को खेलना नहीं आता पहले बता रहा हूँ खेलते कैसे ये सिखाना पड़ेगा तुम लोग को It's extremely difficult, yes. But the only ones who can do it are you two. As for me, during this time, I'll be out of town. Out of town? Are you going to that place full of dreams where the traveler went? Yes. I want to try something. There must still be a small wisp of possibility. Hurry and go. Dreams are supposed to be fantastical, romantic, and full of pleasant surprises. Unnecessary things like this samsara need to end. I know how to play COC. मैं COC छोड़ 4 साल हो गए तुमको COC छोड़े हुए शायद या Among Us खेल गया Among Us Among Us भी तो डाउनलोड होता है COC पर वही बोल रहा हूँ सिखाना पड़ेगा मेरे को कैसे खेलते मेरे को पता नहीं मैं आज तक कभी खेला भी नहीं डाउनलोड तक नहीं किया ऐसा वैसे भी क्राफ्ट करने में तो मैं वीक हूँ फाइटिंग वाइटिंग करवा लो मेरे से एक तो लाइट चली गई मेरे इधर बैकग्राउंड से आवाज आ रही है कुछ how to play COC fighting
या यूट्यूब पे देखूं? पता नहीं क्या फिक्स किया इन लोगों ने। अभी 30 MB का अपडेट दिया था इन लोगों ने, कुछ तो फिक्स ही किया है। COC 2 इजी, पर मैंने कभी देखा तक नहीं है गेम कैसा है यार। सब लोग बोल रहे खेलने के लिए। इजी तो होगा पर देखा होगा कभी जिंदगी में कैसा गेम है, तभी तो होता। You're back. You left in a hurry last time. Is everything okay? Everything's fine. Just, it's a little hard to explain. But no need An experiment? That came out of nowhere. strategy. What do you ऐसा need क्या? me to do? दिमाग लगा के लिखना पड़ेगा। You want me to make a wish? Is that a new Sub-Zero's festival tradition or something? What's questions for wishing? Okay. Okay. My wish. My wish. Okay. I'm a little nervous saying this out loud, but I want Miss Dunyarzad to be happy. I noticed earlier that she looked a bit down, and she wasn't really talking to anyone. She just doesn't seem like herself. She's always so gentle and kind, and all the ये kids 2 दिन love से क्वेस्ट चल रहा है, बता 2 दिन से ये क्वेस्ट हो नहीं पा रहा है मेरे से। ये also किसी जगह पे wondered गोल if गोल the घूमे reason जा she रहा है, asked me to be fairest knight of flowers खत्म होने का is नाम ही because नहीं ले I'm रहा है। special to her or something. So, you have a crush on Dunyarzad? Oh, is it that obvious? After what I just said, I guess it is. When she placed the hat of the Knight of Flowers onto my head, she said to me, I want everyone to have a happy Sub-Zero's festival. What she didn't realize was that I'm not that interested in how everyone else feels. Okay, yeah, that was a bit much. Felt like the right moment to get it off my chest, but it was pretty embarrassing. Okay, I'm ready to make my wish. I would like Miss Dunyarzad to appear in front of me right now with a smile on her face. Here goes. Please come true. I'm gonna open my eyes. Oh, you're... What? Funky? Sorry, but only one portion of Yalda candies per person. Back home you go. Nice try, you two. Anyway, never mind. I don't need to see her appear right in front of me. As long as she's happy. Guess he isn't the host of this dream after all. Should have expected it wouldn't be this easy. It seems like everyone who knows Dunyarzad loves her. None of them has any idea that she... फिर वही फाइट वाला सीन। That sounds like Tia! Oh. Huh? But Tia can handle them! Hey, Traveler! अभी थोड़ी ना खेलेंगे, कल खेलेंगे। कल की स्ट्रीम होगी, अभी तो आज की स्ट्रीम में ही खेल रहे हैं। वो डाउनलोड करना पड़ेगा मेरे को। कल डाउनलोड करूँगा, कल खेलते हैं COC। वही सेम फाइट वाला सीन जो पहली बार हम लोग बग गए थे तब। Oh, it's you. Great timing. Please take... Hey, this is my job. The homie Yanni's through me, not you. You... Fine, right. Knock yourself out. डरा दिया इसको है। It's not like I don't trust your fighting skills.
दिया को भगा दिया। अरे तो पिछली बार ये जाके लड़ रही थी। So you got yourself some backup. Suit yourself. New punching. Solidified. सही में। Everybody stand back. No, my sword. Witness the power of Gugwa. क्या अटक रहा है पूरा गेम, क्या ही अटक रहा है, मतलब क्या बताऊँ मैं। 34,000, 12,000, 30,000, 10,000, 8,000। सही देखो डैमेज तो सही है पर गेम अटक रही है, गलत सीन है। Rain outlines your fate. गेम अटक रही है, बाकी डैमेज तो 30,000 दे रही है ये दुनिया को। 30,000। गुस्सा उतार रहा हूँ मैंने। पूरा गेम पता है ग्लिच हो रहा है मेरा पूरा का पूरा। सुमेरु में जाते साथ ही लग रहा है मेरे को डिलीट करके वापस डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड ये कौन सी गेम हो, मैं क्या है इस सीन का। देखने जा रही चोरी चुपके। एक काम करता हूँ मैं, इसका शैडो बंद करता हूँ। थोड़ी सेटिंग करता हूँ मैं इसको, बहुत ज़्यादा अटक रही है गेम, ऐसे तो खेल ही नहीं पाऊँगा फिर मैं। शैडो क्वालिटी लो करके रखूँ मैं। अब सही है। वो सब इतना हाई इतना मतलब मीडियम था, हाई भी नहीं था। अभी तो अटक नहीं रही है। देखता हूँ अटकेगी तो गलत चीज़ है फिर तो। मेरे को फ़ोन पे शिफ्ट होना पड़ेगा, मेरा फ़ोन सपोर्ट करेगा गेम को। वो 128 है स्टोरेज उसका। अभी शायद से सही हो गई है, शायद इसे कम अटके। सब कुछ मीडियम था ना, तो उसमें पता नहीं चलता है। क्वालिटी बैलेंस में रखा है तो सही दिखेगा। ये क्वेस्ट कब खत्म होगा, दिमाग के लेकर रखा है पूरा। सेम चीजें देख देख के मेरा सर दर्द कर गया।
हम एंटर किए थे सबसे पहले इसी से मिले थे और इसकी स्टोरी चल रही है पूरी है। बाद में क्या बोलते तो मतलब बाद में पता चलता है कि क्या नाम है फॉर कमिंग योर लाइफ। हाँ वो फैन का साउंड है, वो लाइट चली गई ना तो वो फैन ऐसी आवाज़ें करता है हमारे घर पर। लाइट आ जाएगी तो सही हो जाता है, अगर मैं बंद कर दूंगा तो ऐसे ही आईपैड की ऐसी कुछ हो जाएगी। थोड़ा देख लो बैकग्राउंड नॉइस हो रहा है। बंद करने के बाद हीट बहुत ज़्यादा होगा, मेन मुद्दा है। There will always be frustrations in life, but I know that the point of living is not to leave behind any regrets. छोड़ो बंद कर देता हूँ। अब आ रही है क्या? बंद ही कर दिया, हीट होगा तो देखा जाएगा। That was what the real fingers I'd said, wasn't it? Does that mean... Yes, traveler. What is it? Oh, so she's still just a puppet. But just now, how come... अब आ रही है क्या साउंड? अब बंद हो चुका है। Where are we going this time? अभी थोड़ा स्मूथ चल रहा है, पता है पहले के हिसाब से। मतलब पहला गेम इतना 30 के डैमेज गया था, 30,000 ऐसा। Body and mind. फिर भी आवाज़ आ रही है। अब कहाँ से आ सकती है आवाज़? अब तो क्या बोलते, बंद कर चुका हूँ मैं, फ़ैन भी बंद किया। वो गेम के अंदर नहीं तो आ रही होगी। If you continue to resist, we will have to order an investigation into every single event organizer. The Grand Sage is गेम का साउंड होगा, फिर म्यूजिक चल रहा होगा ना सेम। exercise tact. वो सेम चीज़ फिर इधर हो रही है। Traveler? You don't have to get involved. अब हर जगह इंटरफेयर ही करना पड़ेगा। I don't want to drag you into this. Traveler? Traveler? What the heck are you doing? If you get arrested by the academia, that's another day gone to waste. पहली बार हमने सब कुछ छोड़ के गलती की थी। Wait, they're not reacting. Have they been scared stiff? Oh, of course! If this is the Sage's plan, they wouldn't put themselves through this. So they're just substitutes. What is this? What अभी happened भी to आ the रही है क्या Grand आवाज़? Sage and his entourage? होल्ड अ मोमेंट। Like I said, they symbolize the goddess of flowers. It's just a shame that all the real Padisaras went extinct after her death. Yes. The Greater Lord brought forth new Padisaras in That beautiful shade of purple. But didn't you just say all the real flowers went extinct after... Yeah. What's going on here? Huh? You guys are acting... सेफ की आँख बंद करवाने पे क्या हुआ? डिसअपीयर। He disappeared! So Milu's the host! What a surprise! Purple Bodysar, it's just like the... So when you saw
sage. As if all the knowledge in the world was being painted onto a canvas right before him. He was captivated after who knows how afterward. The Dendro Arc, his wife, fled in the end. So, yes. Paimon understands where you're coming from now. I see. Well, it just so happens that today's Sub-Zero's festival is almost up. Since we're in a dream, let's make this final dance of Sub-Zero's as beautiful as we can. इसको नचवाएंगे हम। The wait is over, everyone. I dedicate this to our god, the dance of Sub-Zero's. क्या सीन है इसमें? हमने 2 डांस देखा अब तक, जो आयाका करती है एक तो, मेरी दूसरा। ऐसा लग ही नहीं रहा कि गेम खेल रहा हूँ बैठ के मैं। एनीमे देख रहे हैं, एनीमे। I'd be lying if I said I had no regrets. I would have loved to see Nelu's dance. ये आ गई। इसको डांस देखना था, इसका ये होता ड्रीम। सभी लोग आ गए जो गायब हुए थे। ये कैरेक्टर भी आने वाली क्या? निकालेगा एक कैरेक्टर तो निकाल ही लूँगा। फिर से ख़त्म हो गया क्या? आखिरी बार ख़त्म हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर से घूमना पड़ेगा क्या उधर ही गोल गोल वही सेम चीज़ें करते हुए। क्या सीन? अब उसको ढूंढना है अपने को। ठीक हो गई Well done, traveler, and Paimon, and thank you, Dunarzad, for organizing the SUMERU festival for me. I'm sorry, who? Dunarzad! You're okay! Oh, don't scare us like that! इमोशनल हो जाती बार Paimon। Oh, a traveler, Paimon. I have something amazing to tell you. I just had a dream. I saw Nelu performing the dance of Sub-Zero's. आखिरकार खत्म हुआ।
खत्म क्या हुआ, अभी तो चालू हुआ एक तरह से। ये पहला क्वेस्ट है इसका। Actually, Nishida, aren't you? Paimon felt like Catherine was acting weird when we met at the SUMERU's festival. And Dinyarzad, did you save her? It's a really long story. We shouldn't disturb her. Her consciousness is still weakened. Let's chat somewhere else. सिर्फ कैरेक्टर की क्वालिटी अच्छी है, बाकी हर किसी की चीज़ की क्वालिटी ख़राब कर दी उन्होंने। अगर वो सही करूँगा तो क्या होगा, लैग होगा वापस से। देखता हूँ, सही करके देखता हूँ। ग्राफिक्स में जाना है सिर्फ। एनवायरनमेंट डिटेल को हाई करना है, मीडियम करना है, ठीक है। अब क्या सही हो गया क्या? आप सही है, थोड़ा मीडियम किया हूँ। यो एकदम तबाहीदार सीन चल रहा है। मीडियम पे रहने देता हूँ, अगर मेरा क्या बोलते हैं एफपीएस ड्रॉप नहीं करता तो अच्छी बात है। तो काइजम में मेरा एफपीएस ड्रॉप नहीं होता है, क्योंकि काइजम छोटी जगह उधर रेंडर होने का वो नहीं होता है सीन ज़्यादा। After we parted on the last day of the SUMERU's festival, among the countless once Dinyarzad, such a small revoltful breath, I used all of it. So it looks like we did manage to save Dinyarzad in the end. Not a moment too soon. Huh? Why are you two smiling so happily? Both are fine. Everyone reacts differently. All right. You two must have a lot of other questions for me. Got it. I hope my कुछ नहीं answers were पूछना मेरे को। satisfactory, seekers of knowledge. To be honest, maintaining Dinyarzad's fading dream took a lot of mental energy. Oh, and even going gets what a relief. Traveler? Paimon? Why am I here? Do either of you know? अब ये क्या बकवास है? You were sleepwalking. You know you can't wake up a sleepwalker. और पहली बात तो इसकी वॉइस को क्या हो गया? Wait for you to wake up. I see. Huh. I should visit my maintenance personnel क्या sometime. चुटकी होगी? क्या गलत सीन है पूरा। न्यू क्वेस्ट। Body and mind. Ad Astra Abyssosk.
खत्म हो गया सब कुछ, सारे क्वेस्ट। क्या मिलेगा मेरे को इससे? ये रेसिपी बस। अभी भी लाइट नहीं आ रखी है। साउंड आ रहा है किस चीज़ का भाई? किस चीज़ का साउंड आ रहा है? क्या चीज़ का साउंड आ रहा है बैकग्राउंड से? कुछ क्या चीज़ का साउंड आ रहा है? मेरा सारा क्वेस्ट कंप्लीट हो गया है। बैकग्राउंड से कैसा साउंड आ रहा है मतलब? ईयरफोन निकाल के वापस लगाऊँ? अगर मैं ईयरफोन निकाल के वापस लगाऊंगा तो स्ट्रीम बंद हो जाएगी मेरी। ऐसा सीन है, क्योंकि वो मतलब मैं एक डिवाइस मतलब एक उससे करता हूँ ना, एक डिवाइस से ही लाइव स्ट्रीम करता हूँ इसलिए। कैसा आवाज़ आ रहा है मतलब कैसा? London Book House is due to receive a batch of new releases today. Might we add a small detour to our adventure? वो गेम का साउंड हो सकता है। Time to act. गेम का साउंड आ रहा है मतलब अजीब सा, या मतलब कैसा? ईयरफोन के अंदर से क्या आवाज़ आ रहा है? स्पीकर फटने की आवाज़ आ रही है, गेम का नहीं है। रुको मैं भी देख लूँ। अच्छा ये साउंड कहाँ से आ रहा है ये? अब सही है? हेलो, इसको निकाल दिया मैंने। ये हेडफोन से दिक्कत है। तो हेडफोन रिमूव करके करना पड़ेगा मेरे को लाइव स्ट्रीम। सब सही है, हटा देता हूँ। पर मेरी आवाज़ फिर दूर से आएगी थोड़ी, क्योंकि कुछ नहीं है, हेडफोन भी नहीं है। हेडफोन एक ही है मेरे पास, सस्ता था। आवाज़ तो क्लियर आ रही है ना? क्योंकि हेडफोन हटा दिया मैंने, हटा दिया। आवाज़ क्लियर है ना मेरी एकदम? देखना पड़ेगा अब क्या सीन है उसका। नया हेडफोन खरीदना पड़ेगा लग रहा है।
ये जंगली के आर्टिफैक्ट्स हैं। अरे हर्ष भाई खेलेंगे खेलेंगे, कल खेलेंगे उसी तो कल की प्लानिंग है उसकी। तो आज जिन खेल ले थोड़ा, कल खेलते हो। डाउनलोड कर लो, तुम भी डाउनलोड कर लो, कल आके खेलना के साथ। देखते हैं वो गेम भी कैसी है। क्या बच के है, मतलब सीन है। थोड़ा खेलने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं भी इन कैरेक्टरों से। किधर जाना है उधर। मैं डोमेन का भी अकेला नहीं खेलता हूँ, बताएं। फिर अभी अकेला खेलूंगा तो प्रैक्टिस होगी। अच्छे पीसेस मिलेंगे तो अच्छी बात है, जैसे क्रिट डैमेज, क्रिट रेट, हेडफोन हटा के खेल रहा हूँ अभी तो हेडफोन खराब हो गया लग रहा मेरा। तो आवाज़ क्लियर आएगी तो बता देना, मतलब खराब होगी तो बता देना, क्लियर आएगी तो बता देना। अभी तो मेरा सिंगजो भी डैमेज देने लग गया थोड़ा। फंस गया। I will tell you how to play COC। बताना, बिना पता चले तो मैं खेल भी नहीं पाऊंगा। वही तो बोला, सिखाना पड़ेगा तुम लोग को, मेरे को आता भी नहीं। गया मैं तो। करना टाइप से कर लिया है। सिंगू का वो ये सही अच्छी बात है। एक तो मर गया, मेरे को ये बॉसेस मारने में टाइम लगते हैं थोड़ा। हाथ थोड़ा बैठ रहा है अभी। कौन सा कैरेक्टर ऐसे यूज करूं?
3 है, इनको तो आराम से यूज़ करूँगा। 6 मिलेंगे आर्टिफैक्ट्स इधर से मेरे को। अच्छा अच्छा डिफेंस इन लोग का प्यारा डिफेंस देते रहते 24 घंटे। Body and mind, time to act. Stabilize. Off we go. Let's light it up. इनसे डॉज करना होता है। Teamwork is dreamwork. Off we go. I will have order. Crumble. Rain cutter. Feel split. That didn't count. मरूंगा या मारूंगा अभी तो पता भी नहीं है। लग रहा मरूंगा ही अटक। Solidify. Time for a light show. ये दो है ना, ऊपर से मेरा सिर्फ एक ही कैरेक्टर 80 है, बाकी 2 60 है। Rain outlines your fate. 300 ही कुछ भी है इसको दोनों को, मतलब 300 भी अभी 8000 का डैमेज देता है। बस मैं इसका वो सिर्फ चेंज किया हूँ आर्टिफैक्ट्स। अच्छे आर्टिफैक्ट्स देने का क्या लेगा ये मेरे को समझ में एक और इधर किधर है ना नूबलेस के लिए। नूबलेस वाला आर्टिफैक्ट्स इधर किधर काम होता है ना, तेरा क्राफ्ट करने जाओगे तो 3 का 1 मिलता है नूबलेस का पीस। इससे अच्छा तो इधर से फार्म कर लेते हैं। ये आएंगे 3 90 लेवल के। Body and mind.
Unified. This is order. The brightest flames. अब मर गए थे क्या? See. फिर मर गया. इसके भरोसे तो मैं आया इधर. जी. सिंसो मर गया भाई. तो ये भी मर जाएगा. मुझे पता ही था. मतलब मैं सिंसो नहीं मरता ना, मैं पहले से सबका वो फुल करके लाना चाहिए था मेरे को. रुको जरा. तो ये नहीं, इस बार मारेंगे. टीम तो वही रहेगी, टीम में कोई बदलाव होगा भी नहीं. पर बात ये, मैं मार तो दूंगा ये भी. अच्छा आर्टिफैक्ट्स मिलना चाहिए इसमें से. जंगली सिंह इसीलिए बिल्ड होंगे. नोबलेस मिलेगा अच्छा, तो क्रिट डैमेज के लिए ट्रेड कर. मुझे वो भी तो है, फ्रीज करता है. मैं फायर वाले को बाद में मारूंगा, पहले इसको मैं मार दूँ. इसको क्या वो भी रिकवर हो गया क्या? एक मिनट. अबे कितना जल्दी मार रहा हूँ मैं, मेरे पास शील्ड लगाता ही नहीं मैं जंगली का. कैसे कैसे बचेगा कैसे? डैमेज भी तो बहुत बड़े अमाउंट में दे रहा है. ये भी आ गया. वो मर गया मेरे बीच में. मेरे को मुझे को बुला ही लेना चाहिए. मैं अपने ही वर्ल्ड में इतना भी नहीं मार पा रहा हूँ मैं. I will have order.
12 सेकेंड कोई नहीं हराएंगे, कितना ही फूड खाना पड़े। एक ही बचा हुआ है। इसका भी एचपी फुल कर लूँ मैं थोड़ा, क्योंकि इसके बाद ये पिटने वाला है। ये 2 मिनट है, 2 मिनट इसको कराने के लिए। अब तो आ रही है। ये सीन वालों को मतलब बहुत मुश्किल से हराना पड़ता है। मेरे जैसे प्लेयर होता है बहुत मुश्किल से हरा पाता है। लेवल अप है नहीं मेरे को कैरेक्टर ढंग से। देखो जरा क्या क्या मिला है मेरे को। इधर क्या देखने आ रहा हूँ। इसमें कुछ नहीं मिल रहा है, इसमें मिला है। मेरा तो पहले ये था ग्रेड रेट, एनर्जी रिचार्ज, एचपी, डिफेंस, ठीक है। पर मेरे को ये मिला है इसका। पर इसमें डिफेंस से पहले डिफेंस की जगह एचपी होता है, एनर्जी रिचार्ज होता, कितना अच्छा रहता है। क्योंकि डिफेंस पे काम नहीं करता है सिंसू, पर इससे अच्छा पीस है। इसमें क्रिट रेट है, इसमें क्रिट रेट क्रिट डैमेज दोनों है। पर मेन मुद्दा इसमें डिफेंस है। चलो कोई नहीं, एक बार बढ़ा के देखते हैं। एनर्जी रिचार्ज मिल जाता है तो अच्छी बात है। एनर्जी रिचार्ज मिल जाएगा तो इसको अप कर लूँगा मैं। इसमें क्या मिलेगा? इसमें मिलता है एनर्जी रिचार्ज या एचपी। एनर्जी रिचार्ज एचपी मिला। एनर्जी रिचार्ज 8 पे एनर्जी रिचार्ज दे दे बस ये लोग। पर 4 ही 2 होते हैं, ये 5 होता है। क्रिट डैमेज इंक्रीज हुआ है, क्रिट रेट इंक्रीज हो जा। एचपी है इसके अंदर, पर डिफेंस क्रिट रेट एलिमेंट ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है। क्रिट रेट और एचपी इंक्रीज हुआ है। अच्छा ही पीस है।
That use it. ये यूज कर लो ना। मैं पर इसके अंदर इसका वो क्या बोलते हैं, अच्छा ये 180 है ना, एनर्जी रिचार्ज चाहिए इसको। और कौन सा पीस मिला था मेरे को? ये सब इसके काम का नहीं है। इससे अच्छा तो पहले वाला ही है। हाइड्रो डैमेज बोनस चाहिए मेरे को, हाइड्रो डैमेज बोनस। पर मेरे पास ज़्यादा पीसेज नहीं है और मेरे को क्राफ्ट करना पड़ेगा। और कोई पीस नहीं था, एक ही था ये मेरे पास। नोब्लेस नोब्लेस में ये है मेरे पास सिर्फ। इसमें 11 एनर्जी रिचार्ज, इसमें 12, पर ये नोब्लेस है। और नोब्लेस में अगर वो होता तो मैं एक्सचेंज कर लेता हूँ। अरे लॉक क्यों नहीं है? लॉक बात रही इसके वेपन का डोमेन ही नहीं खुल रखा है। डोमेन जब खुलता है तो मैं भूल जाता हूँ अपग्रेड करना। टैलेंट टैलेंट फोर पेज नोब्लेस चाहिए ना इसको। नोब्लेस तो 5 ही है, वो भी इसको दे रखा हूँ मैं। इसमें कोई साइड बोनस ही नहीं है। इसको दे देते फिर, ये दिक्कत है। सब अलग अलग हुए, एक के ऊपर ही बना दो तो नोब्लेस। फिर पास एक क्रिम्सन विच, साथ है क्रिम्सन विच। पर ये तो उसका है पीस। क्रिम्सन विच भी नहीं दे सकता मैं। क्रिम्सन विच HP ये सही था, पर मैं इसको अपने किया हूँ। ये भी एक तरह से सही है, पर इसको भी अपने कर रखा हूँ मैं। ये शिजू को भी दे रखा हूँ, पर ये भी अपना ही है। प्लैनेट के पास सिर्फ यही है। वंडर में मेरे पास पीसीस तो है, पर अलग अलग कैरेक्टर को दे रखा हूँ पीसीस। हीलिंग बोनस नहीं है इसमें, HP है ये इसको पास है, तो उसके पास होने का कोई मतलब नहीं है, पर मैं इसको अपग्रेड नहीं कर सकता हूँ।
पर जोंगली के पास है ना ये वाला एचपी। मेरे पास इसमें एचपी है क्या? एचपी तो है। और ये जोंगली को दे सकता हूँ मैं, पर जोंगली का भी सेट खराब हो जाएगा। जोंगली को देखूं कौन कौन सा सेट है। 4 पीस है पूरा का पूरा। और इसका एक चीज अलग है, ये रहा। तो मैं चेंज तो कर सकता हूँ। एचपी है, इसके बाद एचपी है। स्विच मार देता हूँ, क्या दिक्कत है? जोंगली का कौन सा पीस खराब हो जाएगा? एक अप्लाई हो गया है। अब एक मूवलेस चाहिए इधर। क्रिएट डैमेज क्या क्या ही करेगा ये। एचपी चाहिए ऊपर इसको। ये तो एक पीस एचपी। एचपी एचपी तो यूज कर सकता हूँ इधर। Adventure Team, assemble! बस पीस नहीं बन रहा अभी भी। इसके अंदर एचपी चाहिए मेरे को। कॉपलेट का एचपी है क्या? है तो एम्बलम में भी एचपी है, पर कॉपलेट में भी एचपी किधर गया? इधर एचपी 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 एनर्जी रिचार्ज एचपी डैमेज। ये है सही। अठारह 19 वेस्ट पूरा। एनर्जी रिचार्ज क्रिट डैमेज एचपी के साथ, यही तो चाहिए था मेरे को। ना हुआ ना किसी बात। अब सेट हुआ ना इसको, मैं इसके ऊपर फोकस ही नहीं किया था कभी। इंक्रीज इन्वेंट बाय 80
और 2 पीस अटैक, 2 पीस अटैक, 2 पीस अनलिमिटेड बस्ट। बस ना सबके पीसी लगे हुए हैं, बस ये चार मतलब यही कैरेक्टर मेरे को चलाने यूज़ करने हैं सब। इसका तो क्या ही देखना है। 15 उसके अंदर क्रिट डैमेज मेरे को बढ़ाना है, 24 मतलब क्रिट रेट बढ़ाना है मेरे को सब में। इस टावर को मेरे को अप करना है एक लेवल, मतलब एंड लेवल तब मेरे को ये मिलेगा। 27 चाहिए मेरे को वो स्टार, और 27 स्टार मिलेंगे किधर? अब तो जंगली भी है ऊपर ऊपर, किधर तो चढ़ के लेके आना है मेरे को। मतलब मेरे सारे क्वेस्ट खत्म, सिर्फ एक ही क्वेस्ट है, अभी ये पिलर को एक्टिवेट करना है। उसके लिए मेरे को ये सब चाहिए, क्या बोलते हैं, पिलर को एक्टिवेट करने के लिए वो जो मिलते हैं कॉइंस। अब मेरा पूरा मतलब पूरा काम यही है, पूरे मैप में घूम घूम के ढूंढना। और ये सबसे यूनिक होता है। ये सबसे यूनिक है, पता नहीं कैसे है। चल इधर इससे एनर्जी लेते लेते मैं इसको मार दूंगा लग रहा है। कैसे मिलेगा मेरे को? इतना बड़ा एरिया है पूरा पूरा। तो मेरा सारा क्वेस्ट खत्म हो गया है, तो कहीं से क्वेस्ट भी नहीं मिल सकता है। तो मेरा हेडफोन भी खराब हो गया। अभी तो 3.1 ही नहीं आया भाई, 3.2 का कैसे बताएं बताओ। वैसे 1 मंथ ऐड कर लो, जैसे 3.1 जब आएगा उसके बाद 1 महीना छोड़ के, मतलब 1 महीने बाद आएगा। क्योंकि मेरे को खुद 30 दिन होते हुए हैं खेलते हुए गेम को। 3.3 में आ रही है शायद से, वो 3.2 में नहीं आ रही है।
वो भी कंफर्म नहीं है, सब लोग वही लगा रहे कि आ सकती है ऐसा, कोई कंफर्म नहीं बताता है इनमें। 3.3 तक आएगी वो, अगर आनी होगी तो। ऐसे तो मेरे को भी करना है, वो मेरे को भी चाहिए मेरे अकाउंट में। राइटन शोगन देख लो कब तक आती है, मैं खुद वेट कर रहा हूँ। एक तो ये लोग ना गेम में मतलब गेम दी तो दिया है, पर इसमें लैग इतना भर के दिया, क्या बताऊँ। अब बड़ा मैप खोल दिया है ना इन्होंने, चाहता तो लैग ही लैग है एकदम चंदी जगह। Time to act. Know my sword. Huh? I'm going in. Rain cutter. Here come the fireworks. 13,000 का डैमेज को मैंने। फिर गेम हीट कर रहा है बहुत ज़्यादा, गेम की वजह से हाइपर हीट कर रहा है मेरा। पहले स्मूथ चलता था, अभी तो मैं लो ग्राफिक करके खेलूँगा, ऐसा लग रहा है। Time for a light show. तुम ऐसे गेम हाई ग्राफिक का फायदा जब उठा सकते हो जबकि तुम्हारे पास पीसी उसी कुछ तो पहले कुछ नहीं। अब इनको पता चलता होगा दूर से कोई जब तीर मारता है तो कैसे लगता है। मेरे सारे क्वेस्ट खत्म हो गए पता है, तो मैं सोच रहा हूँ करूँगा क्या। ट्रेजर हंट कर रहा हूँ मैं। What do we have here? एक स्टार। अभी तो मैं स्टार ढूंढने का काम कर रहा हूँ, सिर्फ स्टार टाइप करते हैं। मेरी एचपी कैसे चली गई? Let me read you a verse.
Solidified! बता देना, कोई मुद्दा नहीं है, पर कल खेलेंगे तो। किधर है ये स्टार? किधर है? ऊपर ऊपर क्या? ये रहा। थोड़ा हीट कम हो, मैं ऐसी सेटिंग बना के हीट की बात नहीं है, मतलब वो ये क्या बोलते हैं, स्किल ड्रॉप कर रहा है थोड़ा फाइट करते हुए। डैमेज तो ठीक ठाक ही देती है। इसको चुल्ला ही है। अच्छा तू मार रहा है चुल्ले, बदला तो मैं ऐसे ही लूंगा। कैसा लगा? Outlines your fate. Treasure hunting, a valiant endeavor. सिर्फ एक ही क्वेस्ट बचा हुआ मेरा, एक क्वेस्ट, वो भी नहीं होगा ये क्वेस्ट इतनी जल्दी, क्योंकि इसमें पिलर ओ स्टैचू ऑफ सेवन जो है उसको अपग्रेड करना है 10th लेवल पे, जिससे वो 10th बॉल मिलेगी, 10th एंड 9th बॉल मिलेगी, जिससे वो पिलर एक्टिवेट करना है। एक पिलर को एक बॉल से एक्टिवेट करते हैं। जो कि इतना आसान नहीं है ढूंढना।
मैं सोच रहा हूँ वेज इकट्ठा करके करूँगा, कल आएगी फिर भी मेरे पास वेज रहेगा नहीं करने के लिए, खत्म करता कोई मतलब नहीं है। सब लोग बचा के रखेंगे पर मैं नहीं बचा के रखूँगा। पैर उन सब जगहों पर घूम के आता हूँ। क्या पता इन जगहों से मेरे को कुछ और मिल जाए स्टोरी। ये करेक्ट क्या बताऊँ, मेरे पास तो आर्टिफैक्ट्स ही नहीं है, क्या यूज़ करूँ मैं इसमें। जैसे मेरे को बनाना को है, डिफेंस ही यूज़ कर रहा हूँ मैं सिर्फ। ड्रीम सो वेरी इम्पोर्टेंट। वही कोई मतलब नहीं देख रहा था कौन सा पीस है उधर। वैसे तो मैं खुद बनाया हूँ ये जोंगली को, ये दे दिया मैं पूरा पूरा जोंगली को पीस। HP अटैक, HP और क्रिट डैमेज। वैसे इसमें HP देना चाहिए था मेरे को, पर क्रिट डैमेज दे दिया क्योंकि मैं सील डाउन बिल्ड किया हूँ, मेरे पास वेपन नहीं है। अरे सेंसू को भी ऐसे किया हूँ मैं, देखो HP और अटैक तो इसमें होता ही है, इसके अंदर अटैक दिया हूँ मैं इसको। इसमें हाइड्रो डैमेज बोनस है, इसमें क्रिट डैमेज है। मैं अभी 4 कैरेक्टर पर फोकस करके रखा हूँ, ये चारों के चारों हैं। और अभी भी बैनेट को सेट किया, मैं इसको भूल गया था, इसका कोई सा वो नहीं था, पीस नहीं था। अच्छा तो मैं बैनेट को ये दिया हूँ वंडर अटैक, इसमें क्रिट डैमेज क्रिट रेट है दोनों। नोबलेस अटैक है, इसमें क्रिट रेट है। इसमें HP दे रखा हूँ, इसमें भी HP है और इसमें भी HP है।
ये सब का एनर्जी इम्पोर्टेंट होता है ना, एनर्जी। मेरे को वेपन बनाना है, चोंगली का वेपन कोई सा अच्छा सा है वो। मेरे को मटेरियल भी तो है वेपन बनाने के लिए। किधर गया मटेरियल? किसमें मटेरियल दिखाई देता है? तो ये भी भूल गया। ये रहा, तो ये 3 ये है, ये वाले मटेरियल। तो फिर बुक, ये चाकू और ये और सब 5 स्टार कहाँ गए लोल? अरे मेरे पास 5 स्टार हैं कितने? इस वाले अकाउंट में 5 स्टार एक ही है, जोंगली है, ये रही ट्रैवलर, और ये चीन अभी मिली थी जो कल। इतने तो 5 स्टार थे मेरे पास। 30 दिन से खेल रहा हूँ और क्या चाहिए। और वो 3 वेपन 5 स्टार है बस। चीन तो मेरे को अभी कल तो मिली थी, कल सुबह मिली थी या परसों रात में मिली थी। कल ही तो चीन को दिखा रहा था मैं। तुम्हारी आईडी थोड़ी ना लॉगिन किया मैंने, वो वाली ये 5 स्टार आर्टिफैक्ट्स। अच्छा वो सारे आर्टिफैक्ट्स वेस्ट कर दिया मैं, ये जोंगली का ये सब बनाने में, ये सारे आर्टिफैक्ट्स बनाने में। अच्छा वेपन क्यों दिखा रहा हूँ मैं? ये सब आर्टिफैक्ट्स बनाने में वेस्ट कर दिया मैं। नूबलेस और ये वो बता तो रहा हूँ, ये सब बनाने में वेस्ट कर दिया मैं। तभी तो जाके ये सब मिले आर्टिफैक्ट्स मेरे को। सस्ते हैं पर कोई दिक्कत नहीं है। फार्म तो कर ही लूंगा मैं, फार्म से तो कोई दिक्कत नहीं मेरे को। इसी के अच्छे बस मिले थे मेरे को आर्टिफैक्ट्स। इसमें क्रिट रेट, क्रिट डैमेज 10 और 25 है ऐसा। इसमें भी 3 और 20 है। ताकि ये चेंज करना था मेरे को, क्रिम्सन विच। वो भी है। एक दिन में तो क्या बोलते हैं, 180 मिलते हैं ना सिर्फ। अभी मेरे पास 14 है सिर्फ, और ये 1 है मेरे पास अभी। मेन मुद्दा है कि गेम अटकने लग रहा है बहुत ज़्यादा। गेम अच्छा पर ही अटक रहा है बहुत ज़्यादा। अभी इतना नहीं अटकता मेरे डिवाइस में, पर जब से अपडेट आया ना बहुत अटकता है अभी गेम बहुत ज़्यादा। बग्स ही बग्स भर रखे हैं लोगों ने। तरीके से मैं लो ग्राफिक में खेल रहा हूँ अभी, तो लो ग्राफिक किया हूँ मैं थोड़ी देर पहले। और लो कर दिया कर, अभी भी अटकेगा। फाइट में तो स्टक हो जाता है पूरा डिस्प्ले मेरा, ये दिक्कत है आईपैड का।
और ऐसे मज़ा भी नहीं आता है। सब लोग पूरी चिड़िया मारते, मैं एक मारता हूँ। क्या बात है। क्वालिटी के लिए मैं इसको एकदम जूम करके रखूँ तब क्वालिटी आएगी। उतनी अच्छी नहीं पर क्वालिटी है। देखो अगर जूम करके खेलूँ तुमसे तो पीसी लेना ही पड़ेगा मेरे को, बिना पीसी का नहीं हो पाएगा। सेंसरी फेल दिया इतनी सारी किसी को पकड़ने ही नहीं दिया। चार थी वो उधर 4। और मेरे सारे क्वेस्ट खत्म हो गए। मेन मुद्दा ये है, कोई क्वेस्ट नहीं बचा मेरे को। घास काटने का काम करूँगा मैं सिर्फ। क्या एक क्वेस्ट छोड़ के बाकी कोई क्वेस्ट नहीं बचा है। ये पिलर वाला सिर्फ 50 प्रीमियम मिलेंगे, पर इससे होगा क्या? ये ढूंढते ढूंढते मैं बुढ़ा हो जाऊंगा लग रहा। पिलर के लिए 27 मेरे को चाहिए कॉइन। ये वाले किधर गया? ये 27 चाहिए मेरे को। दो किए पर इनका भी यूज़ कहाँ ही करूँगा मैं। मिलता ही नहीं है मेरे को कोई जगह। तुमसे जिस जगह पर जाकर एक ही यूज़ होती है। या तो मैं एकदम नई आईडी बनाऊँ फिर खेलूँ। क्योंकि इस आईडी में मैं शुरू से गलती किया था, यूज़ कर लेता था मैं शुरू से। ये क्या होता है? इससे क्या होगा? क्या कर सकता हूँ मैं इससे? ये ज़्यादा इसको यूज़ करके देखूँ क्या चीज़ होता है। नेक्स्ट यूज़ करोगा क्या चीज़ होता है मेरे को तो भी नहीं पता। ये तो गायब हो गया। अब सीन से डैमेज देने लग गया थोड़ा। मेरा क्रिट क्या इतना ही करता है? क्रिट कुछ नहीं करता है। ये मियाँ मार देती है फिर। और इन लोगों ने मेरा वेस्ट करा दिया क्या? वो जो मैं यूज़ कर रहा था पता नहीं क्या चीज़ था। है क्या चीज़ वैसे वो? वन टाइम यूज है ऐसे। ये क्या कब होगा ये 0% तो
ये एक्टिवेट कैसे होगा? कितने साल ले लेगा ये? 0% 6% भी नहीं गया अभी। इसको छोड़ दूंगा, ऐसे चलता रहेगा ये अपने आप ही। अभी तक मेरा वाईफाई होता डाउनलोड होता है, क्या डाउनलोड कर रहा हूँ? क्या सीन है इसका, पता है क्या कुछ? अब 5% हुआ। अच्छा, जंगली का सीड उससे होता है, सीड से कितनी बार टच हो रहा है उतनी बार ये बढ़ता हो। Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? सही है फिर तो। %77 हो गया जंगली के सीड से। क्या मिलेगा अभी? मटेरियल। मेरे को पहले पता ही नहीं था इससे मटेरियल। Boats are made for transferring commodities back and forth, and those that come across. 6 दिन बाद कर सकते हैं उसको। थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है? शैडो किधर है? शैडो क्वालिटी ऑफ करने का ऑप्शन नहीं है, लो कर रहा हूँ। When did you arrive? I was complete. Morning, cutie. I'm sure you're keeping on top of everything that needs doing. But if you find yourself struggling, COC में क्राफ्ट करने का होता है मेरे को ज़्यादा to lend a hand. मैं इसके अंदर क्राफ्ट नहीं कर पाता तो उसमें क्या करूँगा? मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। We have put in much work of late and to much avail. नई चीजें। न्यू, जो न्यू चीजें होती है वही क्राफ्ट करने से इसका वो बढ़ता है। ट्रस्ट लेवल, ट्रस्ट 2000 मिला भी तो मैं बहुत सारी चीज़ें खरीद सकता हूँ। 3 घंटे में 200 मिलता है और मैं 2 दिन से आया नहीं इसके अंदर। छह लेवल 8 लेवल में तो ट्रस्ट लेवल पे खुलेगा सब। इधर मैं एक चीज देखा था, एक सेट पूरा का पूरा
ये सारी चीज़ें हटा के वो सेट बाय करता हूँ और वो पूरा घर बनाता हूँ। ये रहा, सब कुछ हटा के ये चीज़ बनाना है मेरे को पूरा। अभी सब कुछ रिस्टोर करता हूँ। रुको, रोटेट करने का ऑप्शन क्यों दे रहा है इसमें? इसको रिस्टोर नहीं कर सकता क्या? अब यही चीज़ बचाई हुई है मेरे लिए। पर मैं भूल गया एक चीज़ में बनाना क्या था मेरे को। इसको भी उठा लो। रिस्टोर वैसे ही हो गया। Osmanthus wine tastes the same as I remember. भूल गया था मैं क्राफ्ट करना। We have put in बिना क्राफ्ट करे तो मैं वो चीज़ बना ही नहीं सकता। मैं ढूंढ रहा था, मेरे को मिला ही नहीं था कुछ भी। बस सब नई चीज़ें हैं। पर ये वाला वुड चाहिए इनके लिए। तेरा वुड खरीद के 50। वुड कितने का पड़ा? मैं देखा भी नहीं। अच्छा, एक का 50 पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं। ये 3 का 1 पड़ता है। मेरे को वो चाहिए ही नहीं। एम के लो पीरो, क्या हाल चाल? को जरा क्राफ्ट कर सकते हैं ना। एक 2 3 चीजें।
मजे में होना चाहिए, अच्छी बात है। आप कैसे? बस चल रहा है। अभी हेडफोन ख़राब हो गया है तो मैं हेडफोन हटा के स्ट्रीम कर रहा हूँ ताकि दुख पीड़ा दर्द सब है अभी तो। हेडफोन यूज़ नहीं कर सकता मैं, बिना हेडफोन के कैसी आवाज़ आ रही है मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा है कि स्ट्रीम पे पता कैसे चले। अच्छी आवाज़ आ रही है ना, मतलब थोड़ी क्लियर आवाज़ आ रही है, मतलब क्या सीन है। If you ever have any... बराबर है, बात सही है। मुझे लग रहा था बराबर, तब हेडफोन के बिना तो कैसी आवाज़ आएगी पता ही नहीं चलेगा। अभी स्ट्रीम के अंदर ही हेडफोन ख़राब हो गया मेरा, चेंज भी कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास कुछ और है नहीं बैकअप के थ्रू। ये प्रीमो जेम्स, ये इतने पुराने मेल पड़े हुए हैं, क्या पता है। Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are अरे those कुछ who भी नहीं है, share memory? कुछ भी। मैं ईयरफोन यूज़ ही नहीं करता, हेडफोन यूज़ करता था, वो हेडफोन ख़राब हो गया अभी। वही तो बोल रहा हूँ, दुख पीड़ा सब कुछ है अभी। अभी देखता हूँ क्या सीन है, ऑर्डर करता हूँ, आएगा ये कभी आएगा पता नहीं, क्योंकि बैकग्राउंड में काम चलता रहता था हेडफोन की वजह से उनकी आवाज़ नहीं आती थी, पर अब काम चलेगा तो होता है कि आवाज़। जब से लोग तब तो वेट करेंगे, वेट ही करते रह जाएंगे। स्ट्रीम का क्या होगा मेरे? नौ मिनट है इसको हराना है, पर ये मेरे को मिलेगा तभी तो रहूँगा। इन्होंने इतना बड़ा मैप दे दिया कि मेरे को मैं ढूंढूं, या इन सबको हराना है। लो आने से पहले फ्रीज कर रहा है, कार शर्म रमाने भी। अच्छा ऐसे ढूंढना है। अभी ये क्या खुल गया? है फिर ये गुलजार आई के बटन में, ये ना ये कोप मोड वाला ऑप्शन। एक तो ये लोग अलग से परेशान कर क्या मर के आओगे तुम लोग रहोगे नहीं तो परेशान भी नहीं करोगे।
किधर होगा? उस साइड में है क्या? या पीछे? इसका तो मार्ग भी नहीं पता चलते हैं। इधर है, इस साइड ही किधर। 8 मिनट हो गए हैं, वो गायब है। क्या डरपोक है? मास्टर से गिवे में 3 जगह है। अरे छाना किधर है? मेरे को ये कंफ्यूजन कर रखे है पूरा पूरा। ये रास्ता कभी इधर दिखाई दे रहा है, कभी उधर दिखाई दे रहा है। क्या कंफ्यूजन है पूरा। अब वो उधर जाने के लिए बोल रहा है, कुछ सुन लेगा अभी मेरे मुँह से। मैप में मार कर, हाँ मार मार मार। तेरे लिए मैं सीट लगा के रखा था। ये लोग टाइम वेस्ट करा रहे हैं मेरा पूरा का पूरा। अच्छा, इनको मारना है शायद से, इनको हराने का है सबको। इनको हरा दूंगा तो अपने आप आ जाएगा सामने, तो फाइनल बॉस होगा ऐसा टाइप। ऊपर जाना है। अरे नहीं समझ में आ रहा मेरे को, किधर जाऊं मैं? वो मार कर ही नहीं तो कर रहा है। चलो लास्ट में ही आएगा ना वो, तब मैं इनको सबको खत्म कर देता हूँ। अब इधर जाने के लिए बोल रहा है। चार मिनट वैसे पूरे खत्म हो, मतलब 4 ही मिनट बचे हैं मेरे। मिल गया दरिया जी के जैसे कर दूंगा। मारने तक का मजा नहीं। सेकंड जनरेशन टेक स्मार्ट बस्टर में कॉन्टैक्ट बस सीरीज 6 और 7। जब देखो जो लेटेस्ट होगी वो लेना, क्या दिक्कत है? लेटेस्ट बेस्ट होता है। लेटेस्ट जो भी निकला होगा ना नया नया एकदम।
अब इनको मार के आता हूँ। यही चीज बचा है मेरे पास, सारा का सारा मैं वो सब करके बैठ गया हूँ। ये स्टार की जरूरत है मेरे को। If we've got nothing else to do, why don't I tell you a story? Fireworks are for now, but friends are forever. कुछ कर रहा था मैं। कितना मिनट बचा है? 7 मिनट। क्या अभी कंप्लीट कर लेंगे क्या? क्या लगता है? 1 घंटे पहले मैं इधर मार्क कर लूँ। इधर स्टार मिलेगा जिससे मैं टावर अपग्रेड करूँगा। इनको भी ख़त्म कर ले, मतलब चांस ही नहीं छोड़ता। 10,000 3 जगह होगा ना, 3 जगह। जो भी सर्कल में सबको मारेंगे। एक बचा हुआ था ये। कितना इजी तो था ये। छः मिनट है 10 सेकंड। झोंगली का सीढ़ी सीधे लगाया मैं। पर मैं जो ढूंढ रहा हूँ मेरे को मिल नहीं रहा है। मॉन्स्टर चाहिए मेरे को, पता है।
ये गया था हमारे घर पे हो रहा है। Body and mind. इधर जाने के लिए बोल तो रहा है। Time to act. बस यही तो एंड है। चाहे वो हो रहा उसको मारना है ना ऐसे। रूइन गार्ड No, my soul. Time to act. Everybody stand back. Witness the power of the one. Solidify. 31 से जा रहे बेटा। डैमेज खत्म है। तुम इसको मारना था या इसको नहीं मारना था? जिसको मैं मार दिया हूँ पता भी नहीं चल रहा है। 2 मिनट है, 2 मिनट। ना इस बार नहीं हो पाएगा क्योंकि ये लोग मेरे को कंफ्यूज करके रखे। मैं उधर जाऊं, इधर जाने के लिए भी बोल ले मैं किसी को। पर टाइम खत्म जब तक नहीं होता तो हार नहीं मानते। चलो अब ये मार कर उधर जाने के लिए बोल रहा और वो मार कर इधर जाने के लिए बोल रहा है। क्या बात है। एक मिनट है सिर्फ। अगर वो भी अगर वो भी मिल भी गया तो भी मैं मार नहीं पाऊंगा उसको। ठीक है मार दिया तो अलग बात है। फिफ्टी सेकेंड का कद्दू मैं मारूंगा उसको भी। एक तो एक और मूवने का है। मार भी 30 सेकेंड है, 20 सेकेंड है। मुझे तो उम्मीद को छोड़ ही दिया मैं। Rain outlines your face. Let's light it up. Time for electro. 6 सेकेंड इसका सील तोड़ दे। खत्म। अरे हो गया था ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट हो गया था। अचीवमेंट मिला, मैं सोचा कंप्लीट कर दिया मैं धीरे। वही मैं बोला ना, ऑलमोस्ट मैं मार ही दिया था उसको। ऑलमोस्ट कोई नहीं, दोबारा ट्राई करूंगा तो पता ही है क्या करना है। What do we have here?
Violet grass is a plant that enjoys a moist environment and is best picked after it rains. If you should choose to pick any, be sure to store them appropriately. दोबारा खेलने को मिलेगा क्या? अच्छी बात है, इस बार समय से पहले खत्म कर दूंगा जाके। वो इतना हार्ड तो नहीं है, पर ये मेरे को समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये देखो, सिर्फ जाना है, किसी से फाइट किए बिना भी मैं वो देख सकता हूँ। ये इधर से पहले इधर किधर ही और था ना। इन लोगों ने लोकेशन चेंज कर दी बात। इसको मारना इम्पोर्टेंट है, तब मिलेगा मेरे को। दूसरा मिल गया इधर से। पीछे तीसरा भी मिल गया, तीसरा मिल गया। हाँ ये रहा, एक बुचड़ू को मारना है। डैमेज देखो, डैमेज स्किल हटा दे तो डैमेज दिखाऊंगा। इसको सिर्फ हटाने की जरूरत नहीं, इसकी चीज भी तो एक टूट गया। डिलीट। वीकली बॉस मार रहा हूँ इसके अंदर से, जो छोटे छोटे मिशन मिलते हैं, छोटे छोटे मिशन। This is great. I feel so relaxed all over. लेफ्ट 80 पॉइंट। अब इसमें बड़ा वो है, इसको मारना है। 100 पॉइंट मिलेगा, 30,000। ये कोई नहीं, उसको बस ऊपर नहीं जाने देना है। इसके ऊपर चढ़ना है। Body and mind. पहला इधर दूसरा था।
ये रहा दूसरा। इसको मारने का Solidify! This is order! Time for a light show! तो है था ये रहा। तो मुझे Teamwork is dreamwork! Ring cut! इम्यून का चीज से Rain outlines your fate. Go to the down! Time for a light show! Let me read you a verse. ये पायरोटैक्स इम्यून है क्या? I will have order! Solidify! Know my soul! Let's light it up! हाँ पायरोटैक्स इम्यून है। मेरे को इसको पायरोटैक नहीं करना है। दागी ऐसे मारो। Rain outlines your fate. Why do they never miss? Why do they never miss? Stabilize! इसके लिए सही टाइमिंग दे रखा है कि ये मेरे से मरेगा नहीं, जैसे पायरोटैक यूज करते हैं। Rain outlines your fate. Solidify! This is order! Know my soul. कितना टाइम लग गया इसको मारते मारते।
क्या मिलेगा? ये फूड मिलेगा, मतलब रेसिपी फ्रेम मिलेगा। क्वेस्ट नहीं मिलेगा तो मेरे को ऐसे ही करना पड़ेगा, छोटा मोटा चीज़। ओहो, गेट तो तुमने बनाया नहीं है, तुम्हारे साथ कैसे आना पड़ेगा मेरे को। दीवार में लटक के बातें कर रहा हूँ मैं भी। इतने भी कंप्लीट हो जाना चाहिए था ना इसका। तीन सीड्स चाहिए इसको। Ready for anything. तो गेम ही क्रैश हो गया।
देखेगा वो तो इधर ही मिलता है ना सीड्स जो रहते हैं। इधर ही देखा था मैं। एक भी नहीं है। काम कर रहा हूँ, इधर उधर घूम के देखता हूँ कहीं से तो कहीं मिलेगा। ये जगह पे मिलता है वो तो मेरे को याद है। फाइट बना सकता हूँ ये वाली जगह पे देखता हूँ। इस पे मिलता है। पहली बार जब ये जगह पे गया था। इधर ही तो होना चाहिए। हर जगह मॉन्स्टर है। टपक जाएगा मेरे से। Don't get too close. Propagate. Germinate. Support applied. I'm done for. Shadow.
एक काम करता हूँ, हिजू को इसका देता हूँ एक बार आर्टिफैक्ट। कैसा मारता फुल आर्टिफैक्ट कर दूंगा बस, पायरो डैमेज बोनस छोड़ के। Let's move before the trail goes cold. There's something in the air. Something that tells me a new case is brewing.